A very good afternoon to one all. I'm your host. Good afternoon to my honor to welcome you all on University on the behalf of lovely professional cities. So आज का हमारा जो वेबिनार का रोल है एक बच्चा वही पेड़ फलता फूलता है वही पेड़ चमकता है. So today we are discussing about the role of parents, how they are playing a keen role in building the careers for tomorrow of their kids, of their child. So we are here. I'm sharing this with much excitement that today our expert will deliver their expertise and tell us about the role of parents in the life of their child. So I'm sure you are excited. You are as excited as I am for today's webinar. So kindly allow me to introduce our experts. I welcome a great orator and a fountainhead of illuminating ideas, Mr. Sarabjit Singh Quatra, Deputy Dean, Human Resource Development Center, lovely professional university. A seasoned personality who has accomplished his MBA from National Institute of Management. He is a certified trainer from JCI University, United States of America, and from the last 15 years, he has been training premium companies across the hierarchies in selling skills, assertiveness, leadership, and soft skills worldwide. So, sir, it's a privilege to have you on board with us today. Thank you so much for joining. Thank you, Dr. Ruby. With equal pleasure, I would like to extend my warm welcome to Professor Archana Malik, Head, Department of Soft Skills at lovely Professional University. An intellectual personality who has completed her MBA Finance from IBS Chandigarh, and to her credit, she is a corporate trainer and certified NLP trainer as well. Her 13 years of experience in innovating different workshops with experiential learning has created a niche in her career, and she has also developed brands for various learning forums for faculty. So, ma'am, thank you so much for giving us your valuable time. Thank you so much for joining. So, with this, we'll begin our today's webinar. I welcome once again to the webinar and looking forward for a great interactive session. So, over to you, sir, ma'am, for the content of the day. Thank you, Dr. Ruby. और सबसे पहले मैं सारे पेरेंट्स का लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और अपने कुलीग प्रोफेसर अर्चना मलिक की तरफ से स्वागत करता हूं. So I would like to welcome all the concerned parents who have joined this very important webinar, Building Careers for Tomorrow, Role of Parents. चर्चा शुरू करने से पहले I would like to just share some good news with the concerned parents. अभी हाल ही में एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक रैंकिंग निकालती है जिसमें पुराने से पुराना और न्यूनतम से न्यूनतम ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो द करंट इंस्टीट्यूशंस ऑल टेक पार्ट और एक रैंकिंग बनती है. बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के सहयोग से with the support of you all, lovely Professional University is now ranked 47th amongst all the government and private universities in India. इतना ही नहीं, इससे पहले एक और खुशखबरी थी, ये वर्ल्ड्स यूनिवर्सिटी विद रियल इम्पैक्ट रैंकिंग 2022. तो अपनी पहले ही इस रैंकिंग में हमने शरीक किया. तो ये ऐसी रैंकिंग्स हैं जिसमें दुनिया भर की मकबूल यूनिवर्सिटीज़ चाहे MIT हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, इसमें पार्टिसिपेट करती. और फिर आपके सहयोग से हमारे बच्चों की कामयाबी की बदौलत हम यहाँ भी भारत का जो रैंकिंग है उसमें सेकंड इन इंडिया, दिस इज व्हाट LPU इज, और ग्लोबल में भी हमने 200 से नीचे 100 और 200 के बीच में ये रैंकिंग हासिल की. This shows the commitment of lovely Professional University
to its most important stakeholder, the student. And with your feedback, with your support, I'm talking about the concerned parents, we are definitely going to move ahead, and together we will try to build the career of our children so that they do well in life, and क्या कहते हैं, उनकी कामयाबी में ही हम सबकी कामयाबी है। तो मैं अपने सहयोगी प्रोफेसर रचना का भी स्वागत करता हूं। तो रचना, ये कुछ एक सवाल हैं, these are certain questions which normally show the concerns of parents we've time and again seen. Can you just focus? Let's say one of the question is career focused education, क्योंकि स्कूल के बाद अब जब करियर की बात होती है तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इज कि किस तरह के करियर की तैयारी या एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाई जाए। ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, स्पेशली these days where there's so many opportunities around all of us, so the choice is abundant, but choice is also responsible for the confusion. Right. कहाँ से कराई जाए, किसमें कराई जाए, कैसे कराई जाए? So where, which and how, these are certain questions which the parents have in their mind. अगर इसका हल उनको मिलता है तो they always feel, because now स्कूल तक तो बच्चे उनके पास रहते थे या उन पे निर्भर भी रहते थे, either they used to be somewhere there only or they were totally dependent on the parents. Now the child is moving on from the school to the higher education arena. One of the biggest concerns is how can I keep track of my child's progress? और एक और सवाल उनके माध्यम में रहता है कि माइंड में, किस तरह की फैसिलिटीज हैं जहां मैं अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेज रहा हूं। तो ये कुछ सवाल हैं, आप कुछ ऐड करेंगी अर्चना जी? श्योर सर, आई थिंक बिल्कुल सही है। जब हम एक पेरेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के। पेरेंट्स जब भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा आता है कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। उन पैरामीटर्स में भले वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हो, रैंकिंग्स हो, एक्रेडिशंस हो, एक करियर की तैयारी कैसे करनी जाए, ठीक है, कि वो कोर्स के अलावा और क्या चीजें वो ढूंढ सकते हैं। तो जब उसकी बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स से दूर होने वाले हैं बच्चे, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिल में, जहन में ये बात होती है कि वो सिर्फ पढ़ाई करने जा रही हैं, उनकी कोई और डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहां यूजुअली पेरेंट्स वरीड होते हैं। आई थिंक एक सवाल हमारे पास ऑलरेडी चैट में है, जहां आई थिंक राहुल जी पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पे ये इंश्योर कैसे करवाते हो आप एलपीयू में कि ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, जो हमारी भी क्वेश्चंस हैं, वो मीट होते हैं। सर, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट, जहां पे आप बता सकते हैं कि राइट क्वालिटी की बात करो, प्लेसमेंट्स की बात करो, एनवायरनमेंट की बात करो, या फैसिलिटीज या कंजीनियल एनवायरनमेंट की, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, तो एलपीयू कैसे ये वहां फिट होता है? इफ यू कुड ड्रॉ सम लाइट ऑन इट। Yes, definitely, Rahul ji, your question is very relevant, very important also, and well asked, I should say. ये जो हमारा अभी का सेशन है, ये आपके सारे उन सवालों का जवाब देने का प्रयास होगा, हम आपसे शेयर करेंगे। शुरू में मैं आपको कुछ एक कहते हैं कि बोलने से ज़्यादा देखने में समझ आती है, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो सके किस तरह का वातावरण लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में है।
Quadra sir, that was impressive, but I'm going to interrupt for a minute because we have certain parents जो कह रहे हैं हिंदी में बात करिए, whereas कुछ parents कह रहे हैं English में. So I have a humble request कि हम bilingual use कर सकते हैं. All right. So we will be trying to use both the languages, and our pace would be also very slow so that both the parent cadre, whether they would be comfortable in Hindi or English, we will try to communicate as per their need and requirement. I believe the parents would have just seen a short glimpse of the infrastructure of the university. University में किस तरह के साधन हैं, the diversity of the student range, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, हर एक प्रदेश से आते हैं, दुनिया भर के काफी 51 मुल्कों से आते हैं. So this is combined diversity plus the ranking we already saw, also the affiliation and accreditations agencies, जो भी agencies एक अच्छी higher education की जिसमें regulatory bodies हैं उनके साथ हमारे tie-ups भी हैं. प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात वो आपने देखा, आगे भी आपसे शेयर करेंगे. वी विल बी शेयरिंग इट विद यू इन फर्दर स्लाइड्स आल्सो. द एक्टिविटीज, sports, which has again been a very lately uprising in the LPU panel, that we've got lots of students who are sports persons who have made not just the university proud of them, but also the entire nation. So these are some of the things we just saw a glimpse. We will be sharing इसके बारे में और भी बात करेंगे आने वाली कुछ slides. कहीं ना कहीं सर, you've answered absolutely correctly in terms of LPU कैसे इन सारी चीजों पे खरा उतरता है. बट यहाँ पे हमेशा एक सवाल आता है हम सबके दिमाग में, और we have a question in mind where we say at times हमारे siblings, हमारे बच्चे कई बार shy होते हैं. ठीक है, जब आप बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जब आपने बात करी एक्सपोजर की, जब आपने बात करी अचीवमेंट्स की, वो कैसे इस पाथ की तरफ चलें, वो एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है. सो इफ यू कुड स्टार्ट वेयर एंड कैरी ऑन, अगर आप कुछ थोड़ा सा बता पाए उनके लिए. Right, Arjuna. Again, it's a very important aspect. One, children are not all children are outgoing and extrovert. हर कोई एकदम से बहुत ज़्यादा confident नहीं होता. मैं, if I take my own example, I was also a very shy student. Very shy student. I was not open with the people. I used to only open up once I had that comfort or the confident level achieved. So बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, lots of students are there who are basically shy. They are not outspoken, I should say. Rather outspoken नहीं होते, ये मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा. वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का ये मानना कि एक बार उनका कॉन्फिडेंस लेवल अटेन हो जाए, and they have reached a comfort level where they feel that they are in their own environment and the environment also supports them, they really shine. They really shine. Archana, let me say that with conviction. तो हमारे यहाँ भी ऐसे बच्चे आते हैं, हर साल इतने बच्चे आते हैं. Lots of people, students are there who are basically shy, और ये स्वाभाविक भी है. It's natural also. Why it is natural? Because they have left their parents, they left their home, they've left the school that they probably would have studied for years together. So they have left those, not just the school, but also their friends in the school. So it is natural that they are
shy, they are anxiety prone, they do not open up. So we understand that as an organization, as a higher education institution who believes in satisfying all the stakeholders, whether they are the students, whether they are the parents. So what we do, what kind of a system we have. देखिए आजकल आपने देखा होगा कि न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स आर अराइविंग ऑन द कैंपस, हजारों की काउंट में गिनती में रोज बच्चे यहाँ आ रहे हैं अपने एक सबसे पहले बच्चा इज मेड टू participate in a event called freshman's induction. अब ये फ्रेशमैन इंडक्शन 2 या 3 दिन का इवेंट है। इसी में सबसे पहले बच्चों की कोई पेपर फॉर्मेलिटीज अगर कोई रहती हैं, एडमिशन फॉर्मेलिटीज रहती हैं, वो पूरी कराई जाती हैं। कोई मान लीजिए सबसे जरूरी चीज एक होती है हमारा आई कार्ड, जो आपने भी देखा होगा, हम फैकल्टी का भी आई कार्ड होता है, तो हर एक बच्चे का एक यूनिक आईडी कार्ड होता है, वो बनाया जाता है। और बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में यही चीजें जो हम अब बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, किस कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, दे आर टोल्ड देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, lots of events are there where they do certain involving games and activities. So the comfort level of the child is kept in mind so that they reach that level of comfort and confidence and start contributing. इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि हर स्टूडेंट जब अपने एक्चुअल रेगुलर क्लासेस में जाता है, जो कि इसके बाद इंडक्शन के बाद शुरू होती हैं, तब भी उसको हर एक बच्चे को एक ना एक मेंटर एलोकेटेड है, जो हमारी ही फैकल्टी में से होते हैं। करीबन हर एक फैकल्टी के हिस्से में 20 से 25 लोग आते हैं, तो उनका काम यही है कि पेशेंटली दे शुड एनहांस द कंफर्ट जोन ऑफ द चाइल्ड एंड द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ चाइल्ड। तो ये कुछ चीजें हम करते हैं, तभी हम जाके बच्चों को करियर फोकस करते हैं। करियर देखिए, व्हाट आई बिलीव वर्चना जी, कि व्हेन आई सी someone shining and succeeding in life, and I feel that if this person can do it, why can't I do it? ये एक दूसरे से बोलते पीयर मोटिवेशन, पीयर इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। So when we see that students are succeeding, they are rising in life, they are availing and grabbing the job opportunities, so they definitely gain their confidence and start performing to their potential. Right, perfect sir. I'll add something here. जैसा आपने बोला कि एक फ्रेशमैन इंडक्शन में कहीं ना कहीं बच्चा पार्टिसिपेट करता है और एक्सपोजर मिल रहा है उसको, एंड उसके बाद क्लासेस में I'll add something. So जैसे ही स्टूडेंट ज्वाइंस द यूनिवर्सिटी, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, उनको कुछ कोर्सेज मिलते हैं जो करियर फोकस्ड होते हैं, जो प्लेसमेंट फोकस्ड होते हैं। ठीक है, वो फोकस इतना क्लियर होता है कि इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग, कि उनको इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, how can they speak fluently in the language during the interview, how are they going to sit, how to make a resume, all that is taught. And we don't stop right here, we also have classes where they are placement oriented, जहां स्पेसिफिकली कि उनको कंपनीज में कैसे आंसर्स देना है, स्किल्स कौन से डेवलप करने हैं, दिस ऑल्सो गोज विद इन द करिकुलम एंड मच बियॉन्ड, एंड दैट इज what is the shining glory that leads every child to the holistic development and career growth. That is some extra efforts the university does and has established a central division for the same. Absolutely, and very rightly said. The Center for Professional Enhancement is doing a wonderful job in practically grooming students, enhancing their verbal ability, giving them skills that are analytical, and also grooming them, making not just CV. I heard now you've started making the e-portfolios or e-resumes of the children, which has enhanced their reach globally. Absolutely, absolutely.
So So that that is, is why you, huh, please go ahead, sir. yeah, I mean, you see, this is the outcome of that professional enhancement opportunities that a student has in LPU. And one of the reason is you can see these are some of the top recruiting companies, globally recognized 500 Fortune 500 companies, you name it, and it's there. And look at the kind of placements that have been done there. These are again some of the more recruiters, and look at the package that the students are getting. ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक लेटेस्ट आपसे शेयर करना चाहूंगा, and I'm sure the parents who are there, these are your children. Tomorrow this photograph may not be, today this photograph may not be of your own ward or child, but tomorrow your child's picture could be here. These are some of our students who are graduates. Just by completing the graduate, they are earning this. Not only that, their growth does not stop here. Rather, whatever they keep on growing exponentially. ये हमारे 2018 के एक एल्यूमनाई हैं, बच्चा है जो आज 18 करोड़ के पैकेज में है. So it is again a lifelong learning that they get here at LPU, and it pays them lifelong. Absolutely. So we've got two questions here, sir, that we'd like to address in between. One question is from a parent called Madhusudan. They say, my fear is about ragging and drugs culture. What about the security of my boys? And also simultaneously, we have another question that, whatever placements you've talked about is very nice, but my sibling has always lived in a protected school and environment. How should they not feel lost? So अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ठीक है प्लेसमेंट अच्छी है, आप बता रहे हैं कि एकेडमिया अच्छा है, बट हमारा बच्चा कहीं ना कहीं ये लॉस्ट और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आ रहा है, कहीं वो लॉस्ट फील ना करे. एंड साइमल्टेनियसली उनको ये कंसर्न भी है कि व्हाट अबाउट substance abuse, what about ragging, what is the university working towards that? Right, right. So I would like to answer this question first. Let me say it with conviction to all the concerned parents. Respecting your concern, ये बहुत एक valid concern है आप सबका, और हम उसकी respect करते हैं. एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी एक it's a zero tolerance towards any kind of alcoholic, intoxicant or drug abuse. One, same goes for ragging. यहाँ पे इतना secure environment है. It is a walled environment which is fit in by the boom barriers and the turnstile gates, जहाँ पे सिर्फ वही अंदर आ सकता है जिसके पास एक वैलिड आईडी कार्ड है. जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो हर वक्त इस निगाह में हैं कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो. जैसे मैंने आपसे पहले बताया, हर बच्चे के पास एक मेंटर है जिसके पास वो खुल करके बात कर सकता है. क्लासरूम्स में, कॉरिडोर्स में, हर जगह पे कैमरास फिट हैं. तो अभी तक हमने ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट सुना नहीं और देखा तो बिल्कुल नहीं है. एक इसका दूसरा, हमारे यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव, आई मीन दिस आई वुड से इट विद कन्विक्शन, I don't believe or think that any other higher education would be having this, where we have in the university an exclusive division of student relationship. अब इस डिवीजन में बच्चे की हर तरह से देख रेख की जाती है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, अटेंडेंस, उसका हॉस्टल में वातावरण. इतना ही नहीं, यहाँ पे इस डिवीजन में ही एक डिपार्टमेंट है. दिस डिपार्टमेंट, एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद all the concerned parents, there is a department on counseling and happiness. This is an exclusive department where there are professionally qualified psychologists, counselors who are available all the time, and they listen to cater to the issues, problems of the child.
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, रैगिंग या substance abuse, this is strictly no. We have never heard of it as of now, and I'm sure we are not going to hear of it because there is zero tolerance of such things, and we are thoroughly, competently equipped to handle this. Thank you so much, sir. That was very helpful. I'm sure now parents are at much more relief. Okay, they can send their child and they can be at peace that okay, they're safe. I'll just add on to what you've said in terms of happiness and counseling cell. We also have a collaboration with online service of Your Dost, which is available 24/7 for 365 days. So कहीं अगर एक बच्चे कभी feel हो रहा है or a child is ever feeling that he or she needs to discuss something, wants to share something, they can always get in touch. We've collaborated with the best in the country so as to make sure that children don't ever feel lost. Okay. There's another question before we go ahead. That is, ma'am, I want to know the treatment of staff with the children, even in hostel accommodation, when they're away from us. Will they feel comfortable? So, would you like to take up the question? Yes, and again, I can understand the parent who has asked this question. Again, it is a very valid question कि मैं तो अपने बच्चों को एक बच्चों की तरह से पाला है, परोसा है, और I have really taken care of them. What about when the students interact with the hostel wardens or probably the faculty that they are interacting with? So I repeat and reiterate the commitment of LPU that the wardens are the caretakers in person and also in the possessions that the student carry. मैं थोड़ी देर के बाद आपसे कुछ एक ऑडियो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि हॉस्टल में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसका एक वैलिड आईडी कार्ड है और वो उस हॉस्टल में रजिस्टर्ड है। इसी तरह से हमारा सिक्योरिटी पर्सोनल भी है, अलग अलग जगह पे हमारे। पहली बात तो हमारे हॉस्टल वार्डन्स जो हैं, बॉयज़ के लिए मेल हॉस्टल वार्डन है और गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए गर्ल वार्डन्स हैं, स्टाफ है। इतना ही नहीं, हमारा जो सिक्योरिटी है वो भी उसमें फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ भी है। इतना ही नहीं, हम टेक्नोलॉजी का भी साथ लेते हैं। ये कुछ आप देखिए, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन भी है। एक हमारा जिसे हम लाइफ लाइन बोलते हैं, यूनिवर्सिटी का यूएमएस सिस्टम, वो भी है जो ऑनलाइन है, जिसके माध्यम से बच्चा हर वक्त कनेक्टेड है और पेरेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी के साथ इसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आवर स्टाफ आर वेल ट्रेन्ड, they are well aware, and they always strictly adhere to the norms so that the child is, which is हमारा मानना यह है, our children who come to us with aspirations and dreams are the biggest stakeholders for the university, and we fully cater to their expectations and justify their confidence to post in us. Thank you, sir. Thank you so much. That was helpful. I think Mr. Harshit Vishal is going to feel a little okay now. So we have two more questions. One is the hostel inside the campus by Akshar MB? Yes, absolutely. We have hostels inside the campus itself. Okay, so you have various options in terms of hostel also. What kind of a hostel room do you want? You can choose कर सकते हैं, whether it's a single seater, AC, non-AC, with a air cooler, or maybe a dorm style, uski choice hai aapke paas. There's another question by Mr. Milan Jain. Can my ward change the room in hostel on request? So would you like to take up the question? Yes, and here let me tell you, मैं अभी बात कर रहा था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। इट्स अगेन सिस्टम ऑनलाइन, और जो भी हमारा काम होता है, बच्चे को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, फिजिकल मोबिलिटी की भी इतनी जरूरत नहीं है। हमारा एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर सब कुछ बच्चा कर सकता है। ये अभी हॉस्टल आपके एलोकेशन की आपने बात की, तो इसी यूएमएस पे हमारा हॉस्टल अकोमोडेशन इंटरफेस है, अलॉटमेंट इंटरफेस है, बच्चा सिलेक्ट कर सकता है।
बच्चा सिलेक्ट करता है, उसको रूम पसंद नहीं आया, उसका भी एक बड़ा वेल डिफाइंड प्रोसीजर है और वो उसकी भी अपनी एक रिक्वेस्ट डाल सकता है और उसके अकॉर्डिंगली subject to availability and all the other parameters. So this facility is also there. And we've got the largest residential facilities in one single campus. I believe all of us know about this as of now. Absolutely. Thank you, sir. I think that was very helpful. So we've got another two questions from the chat here. One is, it may be due to a distance from the academic block by Mr. Milan Jain, which is true, absolutely. So it is at a simple and I would say a very close distance within the blocks. It's not very far off when you're talking about it. Not even take a minute or so to walk between hostel and the academic block. So if we are talking about the girls hostel or you're talking about the boys hostel, it's very close to the academic block. That's one. सेकेंडली अगर कहीं और बच्चे को, क्योंकि वी आर अ वेरी ह्यूज कैंपस, अगर बच्चे को कहीं और ट्रैवल करना है, वी आल्सो हैव ई रिक्शास, वी आल्सो हैव cycles where a student can issue a cycle from one stand and take it to another one and drop it there. Okay, so it's not only one mode a student may decide to walk. अगर उनको walk नहीं करना, they have e-rickshaws where they can get inside, वो एक side से आ सकते हैं और वो दूसरे academic block या किसी और जगह पे जा सकते हैं अपने hostel तक, or they can walk through. It's not a huge distance at all. We have another question And here which, sir, please go just ahead. like, can I add one thing? और Sir, मैं ये please. पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो हमारे वॉकिंग पाथवेज आर सेपरेट देन दी व्हीकुलर पाथवेज, सो वो उसमें आले बहुत ग्रीनरी है और क्रॉस वेंटिलेशन है, इतनी एक्यूट गर्मी में भी महसूस नहीं होता अगर वो वॉकिंग पाथवे को इस्तेमाल करता है बच्चा. Perfect, perfect. Thank you. So we have another question. Within 4 years of BTech career, are there any chances of my child being offered courses abroad by Mr. Chala Madhusudan? Okay. I believe, Archana, that we have integrated courses. We have tie-ups with the foreign higher education institutions in various countries. तो हमारी साइट पे इसके बारे में बहुत elaborately दिया गया है. तो admissions के भी अगर आपके हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं. पर अब के लिए मेरा ख्याल, मैं आपसे ये विद कन्विक्शन कहूँगा कि काफ़ी इंटरनेशनल टाई अप्स हैं हमारे बच्चों के पास. ऐसा they have this privilege of continuing their studies, either some credit courses here and then some there, but there are well defined universities, and for details I think please they should get in touch with our admission personnel. Absolutely. Thank you so much, sir. So whatever we've discussed till now, we understand कि कुछ हमने ये discuss किया काफी हद तक कि हम कैसे. Archana, can I button please? There are lots of parents here. मैं एक सवाल अब पेरेंट्स को भी करना चाहता हूँ और ये मैं स्क्रीन पे पूछ रहा हूँ. Go ahead, sir. Go ahead. How can we as parents contribute to the child? देखिए ये एक it's again a team effort. We are two biggest support of our children. One, we as a higher education university, हम तो एक सपोर्ट है ही हैं, और दूसरा आप पेरेंट्स. तो दोनों की सपोर्ट के बिना ये बच्चे की जो गाड़ी है कामयाबी की, the success vehicle of the child cannot move. So somewhere I personally feel that parents also have a lot to contribute. They do contribute, but let us just now focus on how can they contribute. एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से. देखिए सबसे बड़ा रोल क्या है कि आप जितनी भी, देखिए जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं और whatever we are sharing with you, you will only realize the effectivity and magnanimity of this once you yourself are part of it. And we welcome, encourage, and invite parents to be part of almost all the activities in the university. We invite them. Induction की बात है, we really seek the participation of the parents. मैं पिछले 25 तारीख से देख रहा हूँ
there are lots of parents who are accompanying their child in the university, and they are also part of the induction. हमारे events होते हैं, convocation होती है जहाँ degrees दी जाती हैं, events हैं जैसे One India, One World, you know, we have so many of the events where we do solicit the participation of the parents. We do invite them. So my humble request to the parents who are part of this webinar today, please do be part of it. दूसरा, हम टेक्नोलॉजी savvy भी हैं, टेक्नोलॉजी कनेक्टेड भी हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है, जो मैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, which again manages the entire roadmap of the child, the faculty, and also the access of the same goes to the parent also. एक हमारा LPU टच है, UMS है, दोनों में कॉन्स्टेंटली आप उसके साथ फेमिलियर रहिएगा, डू सर्फ ऑन इट, एंड डू regularly or frequently, I should say, if not very regularly, they should be connected to the university in that place. There are mentors which are appointed, I already mentioned. Do talk to the mentors. They do ring up the parents at some times. So please do talk to the mentors whenever they call, or even if you have anything, call up the mentor. They will definitely respond to your concerns. And of course, the division of student relationship, ये सब आपकी साथ कम्युनिकेट करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं हरदम. So please be in touch with them. ये एक I'll just quickly add something. जब आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत मेजर इवेंट होता है जहां स्कूल में जब हम बच्चे जाते थे तो एक पेरेंट्स टीचर्स मीट होती थी, ठीक है? Yes. We're really delighted to know that LPU also conducts parents teachers meet on campus. That's for sure कि आसपास के जितने cities के बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स आके मिल सकते हैं, mentors को, heads को, deans को. It doesn't stop here. हम major cities of the country में भी ये parents teachers meet करवा दें. So you can go out and meet the teachers there, meet the heads there, and understand what exactly is going on. That is something very important, and I would really request कि आप हमेशा, जैसे सर ने बोला कि mentors allotted होते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी हर पेरेंट से कि आप उस मेंटर का नंबर सेव करके रखें, क्योंकि अगर आपको कभी कुछ अपने वार्ड के बारे में पूछना है या कभी किसी वार्ड, किसी फैकल्टी मेंटर को आपको कुछ बताना है, तो आपके पास वो नंबर सेव हो एंड यू नो दिस इज अबाउट योर वार्ड. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सारे वो नंबर सेव करके रखें. Very what other roles that a parent can play, if you could just help us understand? See, we all, the educational institutions, you, me, and the parents that who are on this webinar, there is one common goal, that is the career of my child, the career of my student, the career of our student who is in the university. तो पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. देखिए, इतनी कई बार चॉइसेस होती हैं. हम करियर ओरिएंटेशन सेमिनार्स भी बहुत करते हैं. हमारा एक एक्सक्लूसिवली डिवीजन है करियर सर्विसेज, तो उसकी जितने भी एक्टिविटीज हैं वो बच्चों को ऑफर होती हैं, पेरेंट्स से भी शेयर होती हैं. तो पेरेंट्स कैन रियली encourage the child to participate in all the activities of the career services division. उनकी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें. किस तरह के वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, so they should again be familiar with them. And one thing I always believe, since now the child is in the higher education, he has grown up, he has also now shed the four walls of the home, so he is basically an adult. So this is the time when you as a parent can act as a philosopher, friend, and also a guide to the child. And together, I think if we all play our roles, we as faculty, the university as an organization, and you as a parent, so collectively if we do, I'm sure our child is going to be not just job ready,
future ready, but also succeed in that future. Perfect, thank you. There are a few questions, Quattro sir, that we'd like to address here. So Mr. Yes. Akshar has asked a question, which is student is a bit worried about the food availability at hostel, and as he's from Kerala. Would you like to take up the question? Yes, a very valid concern, and thank you for asking us this question. हमारे यहाँ पे 8 बॉयज हॉस्टल हैं और 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं. ये सेपरेट क्वार्टर्स हैं, इनमें अपनी अपनी सेपरेट मेसेज हैं, जहाँ पे हर बच्चों जिस हिसाब के बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं उस हिसाब से मेन्यू होता है. स्पेशली फॉर आवर फ्रेंड्स फ्रॉम डाउन साउथ, we have special menu which is displayed and executed and is provided to the child. Having said that, I would also like to clear one aspect to all the parents with due respect, that हर तरह का खाना आपको मिलेगा, हर स्टेट का खाना मिल सकता है, लेकिन वो वेजिटेरियन है. We are a strictly vegetarian university. Within the vegetarian framework and parameter, you would find the choice of your state being provided here to the child. And I repeat, vegetarian है तो सब कुछ मिलता है. Great. I'll just add something there, sir. So the child has various options. The way you said, the food is extremely nutritious and has quality checks as well. So we have cuisines where a child can choose from northern cuisine, southern cuisine, Punjabi cuisine for that matter, especially Haryanvi cuisine. Okay, so आपका बच्चा जिस भी तरीके से जो cuisine लेना चाहता है वो उसके पास वो options है. You also have an option of skip a meal. कि आपको कई बार लगता है कि बच्चा breakfast कर रहा है, उसके बाद वो क्लासेस के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ यही खाना खाना चाहते हैं, doesn't want to go back to the hostel. So you can choose an option of skip a meal. Also to add to it, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा ना मे बी फूडी है, हमें नहीं पता कि वो एक बार अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर मील टाइप से. सो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन वेयर एक अला कार्ड जैसे आप एक मेन्यू से चूज करते हैं, बच्चे के पास वो ऑप्शन भी होता है. सो यू गॉट वेरियस ऑप्शंस दैट आर इजीली अवेलेबल. So we'll proceed. We've got several questions. We'll answer them first. So one of the question is there any scope to get scholarship for physically challenged candidates for part-time PhD in Ayurveda pharmacy if the candidate failed to qualify LPU NET exam? This is by Mr. Tuhin Kanti Biswas. Can you read the last line again? If the candidate has failed to clear the exam of LPU NET, can the child get a scholarship in PhD part-time for Ayurveda pharmacy? Got it. I got it. एक आपने देखिए, I believe your child has attempted NEST and had not qualified for that. Again, this is something which the admissions would be able to answer. But ये definitely है, हमारे पास scholarship schemes हैं, उसका criteria, eligible criteria अगर detail में है, I'm sure the admission panel would be able to help us. अर्चना आप ये note कर लीजिए इनका. So we will ask the concerned official to get back to the gentleman and see how best we can help them. Absolutely. So we have another question from Mr. Madhusudan, where is who will be my ward's roommate and how will you select the ward, the roommates? Okay, all right. मैंने आपसे पहले किया, I think if you were there in my earlier interaction, I mentioned that it's an online interface and the child has all the subject to availability. The child has all the freedom to select the room and also the roommate. If they want a friend of them, they are together, they can apply and book it online, and so that it is reserved for them. तो काफी फ्रेंडली है. अगर ऐसा है तो इमीडिएटली दोनों मिलके वो अपना रूम एक एलोकेट करवा सकते हैं. ऑनलाइन प्रोसेस है एंड इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमने देखी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए. Absolutely, thank you, sir. So we have another question from Shamas, where there's, are they allowed to go out of campus during holidays? Yes, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते.
there are certain norms. देखिए किसी भी organization में कुछ norms होते हैं. There are some time limits are there. Within that they can move out. Only thing is the hostel warden should be in awareness of their outgoing and ingoing time. बाकी ऐसी कोई बात नहीं है. इतना मैं फिर रिपीट करना चाहूँ कि कई बार बच्चे बाहर जाके कुछ ऐसी चीजों में अंडल्ज करते हैं जो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अगेंस्ट है. फॉर एग्जांपल, वी आर अ जीरो अल्कोहल जीरो ड्रग, बट इफ अ चाइल्ड गोज आउट and has it and he comes back, and our security people are very much equipped to handle such cases. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज पूरी फ्रीडम है यूनिवर्सिटी के अंदर भी. हर तरह के कियोस्क्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं. यूनिवर्सिटी एक खुद एक टाउनशिप है. यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी आपको सब मिलेगी, बेसिक से भी ज्यादा. तरह तरह के फूड कियोस्क्स हैं जहाँ खाने को मिलता है, शॉपिंग मॉल्स हैं, जिम्स हैं. तो बहुत कम जरूरत पड़ती है बाहर जाने की, लेकिन जाने की कोई ऐसी कोई रोक नहीं है. There is no stopping them within the stipulated parameters and timings that have been suggested. Perfect. Thank you, sir. So we have another question from Mr. Akshar. As a parent, shall I get a point of contact from teachers to get in touch with? I'll answer this one. Absolutely, like Quatra sir had said, in terms of mentors, आप जैसे ही अपना UMS login करेंगे, जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अभी सर आपको थोड़ी देर में बताएंगे, you'll get the details of the faculty mentor, जिस student के वो faculty mentor हैं. You'll get the email ID, आपको phone number मिलेगा. Not only that, you'll also get the details of the HOD of that particular faculty, and also the details of the dean. So in case you want to reach out, you can absolutely feel free and reach out to them. Our request would be, please make sure that आप वो number save करके रखें. It is extremely important. Okay. There's another question which is by Mr. Abhinav Tiwari. What are the companies that come for internship? So if you allow, may I please answer this one? Please, why not? Why not? Sure. Thank you so much. So, Mr. Tiwari, primarily when we talk about internships at LPU, there's several companies that come, whether you're talking in terms of any discipline. अगर आप engineering की बात करें, computer science, mechanical, civil, ECE, biotech, हर field की companies आती हैं. To name a few, in terms of IT, we can name Virtusa, we can name several others in terms of Alto, or you can even name the best of the IT companies around. If you're talking about internship, Cognizant, Infosys, these are our basic day one companies. If you go further, you talk about core mechanical companies, we also get AutoCAD here to hire our students and also offer internships. So we're not limited to one particular thing. And हम यहाँ पे नहीं, हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं करें, whether आप बात करें MBA की, आप बात करें एनिमेशन की, आप बात करें डिजाइन की. I'll give you a quick example. हमारा इस बार का international stipend for a student was 10.08 lakh and that's availed. ये एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट का है, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. She's got the highest international stipend which is 10.08 lakh, and national stipend that has been availed so far has been 1.64 lakh. So in every stream we get companies that offer internships, and कई बार companies internship के बाद एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी बच्चे को दे देती हैं, जहां उनको लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा है and we don't want to let go. काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है. बच्चे ने अच्छा काम किया तो there is a huge probability of this. Absolutely, absolutely. So I think we've answered that question. We've got another question here which says that is it compulsory for parents to come during the verification process? As we could not come on the induction day, so my child's local guardian would come and do it. Is that okay? I think, yeah, fair enough. Absolutely, it is absolutely fair enough. That is there. Okay. We also have a question. What about the medical facilities there in case a student is sick, by Mr. Akshar? So would you like to answer the question? Yes. I would like to inform and state the facts. हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही सॉरी एक यूनी हॉस्पिटल है जो हर तरह की whether it's an eye, ear, gynae, or probably medical exigencies, they are equipped, qualified doctors are there, 24/7 operated है, और qualified staff nurses भी हैं.
5-6 तरह की हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है किसी भी मेडिकल एक्सीजेंसी को हैंडल करने के लिए। इतना ही नहीं, in the campus itself, apart from this well-equipped hospital with qualified doctors, we've got the lab testing facilities that are also there. Pharmacies also within the university campus. So by the grace of God, till now we have been handling most of the medical exigencies. And if खुदा ना खास्ता या गॉड फॉरबिड अगर मेडिकल कुछ एक्सीजेंसी बड़ी हो निकलती है तो उसके लिए भी हमारे यूनिवर्सिटी के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप्स हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड एक सिस्टम ऐसा है किसी को इसकी जरूरत ना पड़े, दिस इज व्हाट आई वुड से, बट इफ एट ऑल it is there, we are equipped to handle any kind of medical exigency. Perfect, thank you. So I'll just add on, so the pharmacy that we have within the campus is 24/7. Okay, so बच्चे को कभी कोई फार्मेसी से कोई भी दवाई की जरूरत लगता है वो चीज, एंड यू हैव एन एम्बुलेंस जिसका नंबर हर बच्चे के पास मिल जाता है वो जैसे ही कैंपस आते हैं। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनको लग रहा है कि उनको कहीं मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। So we have a question from Mr. Tarsen Singh. What are the summer and winter holidays held in the university? So I'll take up this question. जहां तक summers and winter break की बात आती है सर, एक academic calendar रिलीज होता है जहां आपका बच्चा जिस कोर्स में है, क्योंकि हर कोर्स कुछ वेरिएंस पे शुरू होता है। फॉर एग्जांपल एक कोर्स आज हाइपोथेटिकली एक MBA का कोर्स शुरू हो रहा है, बट कुछ बच्चे कैंपस में बीटेक के बाद में आ रहे हैं। सो हर कोर्स के अकॉर्डिंग इनकी एक टर्म ऑफ होती है, ठीक है। Majority wise winter break is during the month of December, ठीक है, and majority wise the summer break is from mid of May or end of May till end of July. That's the usual case, ठीक है। This is usually the case. However, ये कुछ हद तक थोड़ा सा डिफरेंस कर सकता है, जहां आपके बच्चे कौन से कोर्स में है, वो कौन से ईयर में है, उसकी लेटरल एंट्री है, वो डिप्लोमा में है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा डिफर करता है। We've got another question here which is Yeah, just I will like to add one thing here. देखिए पेरेंट्स और बच्चा, जिसे अभी आपने अर्चना जी ने बताया कि आप हमारे यूएमएस सिस्टम में जाके वहां पे लॉग इन करके देख सकते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर जो कि साल सेमेस्टर और पढ़ाई के पहले ही अपलोडेड होता है और वो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको अभी भी पता चल सकता है कि आपकी विंटर वेकेशंस कब हैं, कब कोर्सेज खत्म हो रहे हैं, कब एग्जाम्स होंगे, कब अगले टर्म शुरू होगा और कब अगले टर्म के ब्रेक ऑफ होगा। तो इट इज अगेन मेंशन इन द एकेडमिक कैलेंडर और आप उसको देख सकते हैं। परफेक्ट। So we've got a set of किस तरह sure. लेट मी रीइटरेट, स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको हमारा मैनेजमेंट सिस्टम। यस, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए पेरेंट्स भी लॉग इन कर सकते हैं। देखिए बच्चा भी लॉग इन करता है इस पे, हमारे फैकल्टी के पास भी एक्सेस है। तो इंटरफेस का स्ट्रक्चर थोड़ा फर्क हो सकता है, पेरेंट्स और स्टूडेंट का यूएमएस सिस्टम सेम है। और देखिए करना क्या है, आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आगे सिर्फ P डालना है, जो भी आपके बच्चे का है डाल के आपके पास उसका एक्सेस राइट मिल जाता है आपको। तो ये इसमें थोड़ी सी फेमिलियरिटी, अगर पेरेंट्स कैन डू दैट by just probing it, and even if they can seek help from our counselors when they come here, they can have an access to the child's entire thing, and you can find these things on the system also. Absolutely. So I'll just take up a few relationship. Yeah, please. There are two other questions that we have. One is what about the honors program of computer science engineering? Do you want me to answer that one, sir? Yes, please. Thank you. So when we talk about an honors program, whether it is BTech CSC or MBA or any of those, we'll pick up BTech CSC in particular. This honors program leverages or gives you an opportunity where you can go ahead and pick up a few subjects of your particular choice. The skills that are imparted are much relevant to what is being offered, though more highlight in terms of the latest technologies. यहाँ courses in collaboration with others हमारे लिए offer करे जाते हैं, ठीक है। So a child can choose, when a child is taking admission, whether he or she wants to pick up a BTech honors course wherein
the child gets a few other subjects to make sure that the child stands out apart from others. So that's one. We've got other few questions, which is okay. Just Very let me interesting. add here also, जो भी Please go आपकी requirement है, whatever the academic requirement of choice of subjects is, the counselors, the admission counselors are well equipped to answer these, so they can again seek their help in case they would want some more information. Absolutely. So, the last few questions also that we have, I'm going to request the admission counselor in the end to take it up, because primarily these are related to admissions directly. So I would request, sir, if you could tell us something about how do we keep in touch with the university. Agar as a parent, mujhe touch mein rehna hai, kaise? How do I go about that? I would again repeat that you have every parent has an access to the university management system by just this is you could suggest adding a P to the student's provisional registration number will give an access to you. उसी में हमारा एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम जिसे RMS बोलते हैं, where you can put up any suggestion, any issues that there are, and they go to the concerned authorities who are bound to take action in a stipulated time frame. If not, it gets escalated to the higher authorities and the action is taken. So one is there, किस तरह से लॉगिन करना है, देखिए ये मोबाइल ऐप है, उसमें आप वहाँ लॉग RMS रिक्वेस्ट वहाँ आता है अगर, or you have to just put a suggestion, request, inquiry, feedback, or even a complaint. You can just tick there, and also you would find the whatever you want. जो भी आपकी RMS request status भी आप देख सकते हैं. तो ये आपके पास access है. This same access is with the child also, and again this is on record, and there is a stipulated time frame within which the concerned official has to answer this and get it resolved. So ये automatic system है. Do take help of this. ये अगर आप हमारे लॉगिन यूएमएस से लॉगिन करना चाहते हैं तो ये एक सिस्टम है हमारा यूएमएस नेविगेशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम. लॉग रिक्वेस्ट वो पहले वाला हमने मोबाइल से आपको दिखाया था, तो ये डू पार्ट बी पार्ट ऑफ इट. Residential facilities ki we've talked a lot about it. There are again, like I said, boom barriers are there where actually only one with the I-card is supposed to enter and they are allowed to enter. For the girls, we have exclusive lady staff manning that, and you can just have a see that. So these are again the facilities and the individual prerogatives that we try to cater to when the child comes to us. Great. There's a question in the chat, sir. You've talked about the residential facilities, the security guards and everything. Can you also tell us something in terms of what is, the road ahead? Learning ke liye, growth ke liye, holistic development ke liye, what is the road ahead? Okay, देखिए, I have just put up a slide here. These are the LPU students who adopted the sports as their career road ahead. तो उन्होंने देखिए हमारे यहाँ पे sports facilities में we've got the largest indoor gymnasium जिसमें swimming pools, Olympic standards के diving pool, shooting ranges, basketball courts, badminton courts, squash courts, they are available there. We've got फील्ड स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है. तो ये ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं. कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बच्चा कर सकता है. अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो करियर में भी 6 करियर पाथवेज हैं. मैं ये एक बड़ी एक नोवेल चीज है, आपको कहीं और मिलने देखने को नजर नहीं आई. हर बच्चा कुछ बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड होते हैं और अपना करियर देखते हैं, उनकी तैयारी उस हिसाब से कराई जाती है, एंट्रेंस टेस्ट उसी हिसाब से प्रैक्टिस कराए जाते हैं. कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हैं तो उनके भी उसी एनालिटिकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स या व्हाटएवर टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, दे आर ट्रेन्ड ऑन दैट. सम पीपल वांट टू स्टडी फर्दर, उनकी उस हिसाब से उनकी करियर गाइडेंस होती है. कुछ पढ़ाई में नहीं लेकिन वो उनका एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं,
आप हैरान होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा एक स्टार्टअप स्कूल है यहाँ पे, where people are guided. So I would just like to request the parents that whatever career pathways are, please do participate. Then डिवीजन ऑफ करियर सर्विस बार बार अनाउंसमेंट निकालता है, तो आप उसकी एक्टिविटीज के साथ जुड़िए. यू विल डेफिनेटली फाइंड a career. Your child will also find a career of his or her calling and liking. Great. So there are a few questions that we'd like to pick up. One of the question is the current date of joining is 20th of August 2022, but my child wishes to join by 1st of September by Mr. Natarajan. I'll take up the question. So Mr. Natarajan, it is fair that आपका बच्चा थोड़ा late join कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. But just to highlight a point, अगर इनकी classes शुरू हो रही हैं तो हमारी एक humble request होगी कि वो classes attend करें, क्योंकि LPU comes under the UGC guidelines, जिसके अंदर it is mandate for every child to maintain 80% of attendance. 5% एक्सीजेंसी लीवरेज मिलती है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या जनरली ट्रैवल के लिए हो. इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड इन एवरी सेमेस्टर. हर सेमेस्टर में हर बच्चे को मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी मेंटेन करनी होती है, अदरवाइज वो सेमेस्टर से डिबार होते हैं. ऑल्सो टू एड, अगर जहां जैसे सर ने इनिशियली कहा, इट वुड बी रियली नाइस कि बच्चा आके इंडक्शन देखे, वो अपने दोस्तों को समझे, आप खुद आके कैंपस देखें, सो द चाइल्ड डजंट मिस द फर्स्ट फ्यू इनिशियल डेज. हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जर्नी के लिए, जैसे फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट. सो इट बी नाइस कि इफ यू कुड जस्ट encourage your child to come beforehand. There's another question. Is a student allowed to go out on Friday prayer, and is there a mosque nearby the campus by Mr. Akshar? So would you like to answer or should I take up? हाँ, आप लीजिए. मैंने इसका पहले भी, you can also add. Yes, definitely, please. So when we talk about it, there is when we talk about LPU as such, we are an all faith university. Okay, we truly value it, we truly believe in it. However, it will totally depend on how the timetable of that particular child is. ठीक है, तो वो चीज है. If you're talking about mosque nearby, yes, there is ample amount of religious places nearby of every religion and every ethnicity. ठीक है. There's another question which is Mr. Vishal has asked us, which is, we are coming from south to drop our child. We are new to the place. Will the parents get an accommodation on payment basis? Sir, should I answer? Would you like to go ahead? Please do answer. So primarily, sir, we are very particular the way Quatra sir had said in terms of our safety and security. Okay, so for that, in terms of hostel, it's only the child can go inside. Okay, so only a child or a ward can go inside the hostel. The parents can definitely stay around LPU, right outside the outskirts of LPU. वहाँ बहुत जगहें हैं where you can stay and easily available at cost-effective rates where you can be around the child, so you don't need to worry. Okay. Also, there is another quick question that we have, which is, my child has, okay, I cannot see the complete question. It is about fashion design. I'll request, okay, yeah, whether my ward has taken to any industry for practical exposure. She has taken admission B fashion. Okay, absolutely yes, ma'am. So if I talk about it, बच्चों के 2-3 तरीके से exposure होते हैं towards industry. बात शुरू करते हैं guest lecture से. So we invite the eminent people from the industry to come and talk about the work, the industry, everything to the child. That's one way. Okay. Second, हम कहीं ना कहीं काफी हद तक encourage करते हैं हमारे recruiters कि वो आके बताएं कि industry की expectations क्या हैं बच्चों से. ठीक है, क्योंकि ultimately after the education expectation होती है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं. Thirdly, students are taken to the various industries, to various fashion shows across the country to give an exposure. We also have every year a fashion show organized by LPU students of B Design to showcase their work, their entire portfolio. I'll add one more line here. One of our students' work was selected and presented in one of the international, fashion weeks abroad. So there's a lot of exposure when you talk about fashion students. Okay. All right. There's another question. That's the beauty of LPU curriculum. Right, sir. Absolutely. There's another question. How can I connect with accounts department to update our account? So would you like to answer? देखिए, इसमें भी आपको contact करने की जरूरत नहीं. Everything is online. You can find your account statement, transfer, payment,
बैंक लोन है तो बैंक भी डायरेक्टली वहां पर ट्रांसफर कर सकता है. The entire debit and credit is visible to the parents whenever you can do. If not, there are also helpline number which directly get connected to the accounts division. There are 24 hours they are trying to help people on, and they could give you the feedback. So there is not any issue any of that kind. Majority of the things, rather all things are online, so you don't even feel need to directly go to the accounts and get in touch with them. But they are available, definitely they are available. Absolutely. So there's another question. What has been the highest package in terms of computer science, and where has मैंने this? दिखाया तो था. I think we already showed you. मैं Absolutely. I'll just reiterate the highest package in terms of what sir had shown initially was with the package of 64 lakh, which was Hari Krishna Mahato and Google in Bangalore office, and also with the package of 62 lakh, which was Arjun S. By the time we also talk about the 3 crore package of Yasir, who's joined in Germany. Parents, if you have any other question, please go ahead. We'd love to answer them. अगर आपके कोई भी और सवाल है, आप please go ahead हमसे पूछिए. We'd love to go ahead and answer all your questions that you have for the day. Let me just quickly go through. Is there any other question that I have? And in the meantime, let me just share with you that 13 of the LPU professors have been ranked amongst the top 2% of scientists in the world, and none other than rather than the prestigious Stanford University. तो आप देखिए कि आपके यहाँ अगर रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है बच्चे का, इनोवेशन बेंट ऑफ माइंड है, तो they are competent people to guide them, teach them and train them. Perfect. I think that's all from today, sir. If you could just in the end show us a final glimpse, what does LPU offer? That would be really nice to end on a high note. All right, let's see if I can do this. Is if it works. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. We'd like to thank your presence. Dr. Ruby, all over to you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. This was very impactful presentation by you, sir. And thank you so much, ma'am and sir, for resolving all the queries of our parents. And we were bounded with your visionary thoughts. And parents, हर मुश्किल काम आसान लगता है जब भगवान साथ होता है. हर मुश्किल काम आसान लगता है जब भगवान साथ होता है. छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी जिंदगी का जब सर पर माँ बाप का हाथ होता है. So parents play a proactive role and not only motivate their children but also help them in decision making, in making a suitable career. So LPU is the right choice for your ward. So don't wait. Take the admissions as soon as possible because the last date of admission is 31st July. You can visit our website, that is www
lpu.in for all the clarification, for all the information for the admission purpose. Plus, you can visit our university. It is open 24/7 and you can visit on Sundays also. So we are here to welcome you. So thank you so much. Thank you so much, experts, for Thank your you. guidance. And thank you Thank so you. much, audience, for participating in today's webinar. I'm sure your knowledge has been enriched. And experts, thank you for I'm sure your years of experience, your years of research will definitely help the audience to choose the right path. So until Thank next you. time, we will finally sign off this session. Thank you, everyone.